Hi, Ashraf. Hi. Sonali, can you hear me? I can hear you. Yes. Okay, great. So, Ashraf, I was just thinking what you shared. I've shared it with Srashti. I really think we should end the show with that, really. Okay. Okay, because I just want to finally, when we wrap up and we just finish. I'll put the banner for 10 seconds. मतलब मैं जब तक banner कर देती Yeah. Is Sukanta in? Okay. Srishti, I've lost the camera, whatever icon. You can put it on whenever. Yeah, okay. Got it. दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है और we are back to after a short break we are back to our very important session 1 of Samagam 2022. So that is where we are, and before we go any further, I request my colleagues in the backend team to kindly play this. I call it the goosebump AV. So it's really inspiring for those of you who will watch it the first time. And we began anyways at 10. So without any waste of time, please put on the AV. आपने ये पॉज कर दिया है. So pardon my repetition, friends. I see that there are close to 150 of us on this session, on session 1 of Samagam 2022, where we will go through CSO coalitions at work, rationale, experiences and challenges. And my friends Ram and Sharmishta will be the moderators for this session. But before we come to them, some brief background and information about Samagam 2022. And as I said, pardon my repetition, please. Some of you have been here since the morning, but for those of you
who are joining us now for this session one. Samagam 2022 is all about partnerships and winning coalitions for achieving our SDGs. So that is what the theme for Samagam 2022 is. For those of you who are unaware, this is the fourth edition of Samagam. And in fact, there is also a very, very interesting history of collaboration and partnership as far as Samagam is concerned. So the first Samagam was held 4 years ago in 2018, which was hosted by Pradhan alone. But over the years, it has expanded in scope, reach, and collaborations. And I'm very happy to share with you that 10 of us have come together today to bring Samagam 2022 for you and for those of you who will watch it later. So, without any further time loss, so to say, let me introduce our two anchors and moderators for the first session. First of all is Mr. Ram Pappu from Mission Samriddhi. I request my tech colleagues to please put the spotlight on Ram. And then we also have Ram's colleague, Ms. Sharmishta. So their brief introductions. Ram has 25 years of work experience in the IT industry in India, Americas, and the Middle East. And he's moved back to India 8 years ago in 2014 to work for holistic development of our villages. So he is working on leading Mission Samriddhi under the guidance of Mr. Arun Jain. So that is what he's doing. And of course, Ram will speak more about his work. Prior to joining Mission Samriddhi, Ram volunteered for an organization that empowered rural adolescent youth through motivational workshops. And he has traveled across the country from Kashmir to Kerala, from Gujarat to Arunachal, facilitating motivational workshops in 250 plus Jawahar Navodaya Vidyalaya. So, quite an expansive and extensive span, Ram, interacting with thousands and thousands of children across 18 states. He has an MCA from NIT Trichy and an MBA from York University, Canada. So, and of course, Mission Samriddhi is doing some excellent social impact platform work, working for sustainable holistic development in rural India. Moving ahead, I also request my tech colleagues to please put Ms. Sharmishta spotlight on her, and you can please, remove me. They are the ones, who will be taking this session further. So Sharmishta Khanapur brings to the development sector close to 3 decades of experience and knowledge of learning and managing R&D programs across collaborations and geographies in the biopharmaceutical and life science industry. And she also moved out of the corporate world to follow her passion. So here we have two exceptionally talented people leaving their corporate careers and moving into the social space when she joined Mission Samriddhi in 2018. So both Ram and Sharmishta through Mission Samriddhi, they work on cluster development programs. They work with various partners across multiple states who are committed to building institutionally strong models of Gram Panchayat clusters. So they bring in a rich background and experience themselves, and who better than both of them to lead us into this session of CSO, as I said, CSO coalitions at work, experiences and challenges. So over to you, Ram and Sharmishta, and all the very best. Thank you, Anup. First of all, am I audible, Anup? Yes, you are. Okay, thanks a lot. Yeah. Thank you, Sharmishta, for joining me in this session. I know you Yes, would. yes, please. Yeah, thank you so much. Yeah. First of all, good morning to all of you, and really thank you, Pradhan. Thank you, Pradhan, for a fantastic innings. Congratulations on your 40th foundation day. I mean, 5 years, 6 years, 10 years, and 40 years. We're talking about 40 years of unstinted, fantastic work. You're like a role model for all of us. IPL is going on, so in true cricketing lingo, let me just say this, Pradhan, great innings so far, but get padded up for the next 60 years, right? I just want to actually draw from the previous samagams we heard this morning. Narendra Naji speaking about, and even Anup was mentioning this. Collaboration builds great value than competition in the development sector. Only collaborations help to scale up pilots and new ideas. Partnerships are essential as the magnitude of issues are far beyond the reach of individual actors. Multiple Samagam sessions have showcased how winning coalitions could effectively address issues. And you saw that in that goosebump video. Yes, I too got the goosebump watching that video, even the second time. Ranging from rural poverty to urban migration, education, health, nutrition, NRM, youth, and mental health, right? Besides, of course, contending with the pandemic.
Now, if there is such a great appreciation and acceptance on the need and value of partnerships and a collaborative way of thinking and working, why do collaborations remain an exception rather than the standard operating procedure for addressing intersectoral, intergenerational development issues? What are the barriers that come in the way of development sector stakeholders coming together, working together to realize a more just and equitable society for all? This is what I mean. I'm just borrowing Sudhir's words when he wrote to us a couple of weeks earlier, but this is something that we are all going to be talking about today. Sharmishta, what do you think? Absolutely, absolutely. Thank you so much for the introduction, Anup. And you're absolutely right, Ram. With the challenges in our social political space, the struggle for funding, and sometimes even the troubles of implementation of projects on the ground, one would wonder if collaborations are the answer to all of this. I mean, shouldn't coalitions be the panacea for all these issues? But in reality, are they the norm? Are they really, coalitions and collaborations? Are they really the norm to address all of this? I think that is what we will try to understand today. Absolutely, Sharmishta. In fact, when we deliberate on this, the question of why we need to work together is really, really a no-brainer, right? We just can't do it alone. Anup said this, Narendra Naji said this. We just can't do it alone. We need to have those partnerships, right? And the real question is, what problems can be solved together? And actually, in fact, even bigger question, the more important question is, how do we make it happen? How can we make the collaborations really work? We have great panelists here today. We have stalwarts from the social sector, and I'm just not going to waste any more time, and I'll just introduce, between me and Sharmishta, we'll introduce this panel of speakers here. I'll first go with Sanjay Singh. Sanjay is there. Can we just have the spotlight on Sanjay Singh, please, for a second? Yeah. Is Sanjay Singh there, please? All right. So, yeah, we have Sanjay Singh. Sanjay Singh, a farmer's son, born in the Jalaun district of Bundelkhand region of Uttar Pradesh. He earned his master's in social service from Jivaji University, Gwalior, and a diploma in business from Indian Institute of Management, IIM Lucknow. Started social work in 1995 in the Chambal area of Bundelkhand at a time when it was ravaged by dacoits. Currently working in 10 districts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh on water security and sustainability. Gandhian philosophy has inspired Sanjay to actively engage in the social, economic, and political upliftment through which he tries to bring qualitative improvements and changes in the lives of the vulnerable and the deprived sections of society with support from women, adolescent groups, youth, social activists, academicians, media functionaries, lawyers, researchers, change makers, students, political forces, panchayat members, and other stakeholders in the development process. Thank you, Sanjay. Welcome to this this collaborative session that we're having today on the power of coalitions, the rationale. Uh, Wonderful to have you here with us. Absolutely. Can we now have the Yeah. spotlight on? Dhanbad Ram. Dhanbad Ram. Thank you, Sanjay ji. Yeah. Can we now have the spotlight on Miss Ashraf Patel, please? Thank you. Thank you so much. So, a short bio. I mean, there's a lot that Ashraf has done, and I think it'll be difficult to go through all of that. But a short bio that I have here is that Ashraf has played a key role in shaping the youth work field over 2 decades as a co-founder of Pravah and Community, the Youth Collective. She's a passionate practitioner and advocate of inside out youth leadership. She's committed to collaboration and is part of shaping a cross sectoral community of leading stakeholders called the Vartaleep Coalition. Who better can we have on this panel when she already has a coalition working? So, this particular coalition is working towards strengthening youth centric development as a systemic approach based on values of justice, equality, liberty, and fraternity enshrined in the Indian Constitution that also further societal well being and global citizenship. Ashraf is a Ashoka Fellow and was recognized as a Social Entrepreneur of the Year 2020 and awarded Distinguished Alumni for Public Service 2014 XLRI. She is on the board of leading organizations like Oxfam India, PHI Foundation, IPTADA,
Keva, and Ivy CEO. Wonderful. I mean, thanks again for joining, Ashraf. We're very thankful to have you on the session today. Wonderful. Thank you, Sharmishta, for introducing Ashraf. I must say that each of these people who have joined us today in this panelists are people who have made a great mark in the development sector, and they've all been leading and managing and bringing together effectively very effective coalitions in the first place. So that kind of unites them all in that sense. My next panelist I would want to share with all of you is Sonali Srivastav. Sonali Srivastav is a development and management professional with over 3 decades of experience in design and management of complex change management interventions across private, government, and non-governmental organizations. She's a founder and CEO of Anode Governance Lab and Anode Governance Foundation, focusing on sustainable rural development through strengthening public institutions at the last mile. We always call it last mile, Sonali. I think we should call it the first mile. At the first mile, with specific attention to gram panchayats, Sonali brings in organization development principles to public administration, focusing on strengthening organizations and their outcomes with people at the center of change processes, the people being the center of the change process. Sonali has experience across development and private sectors. Interestingly, she, like Ashraf, started off a career spanning in the corporate sector. She's worked in Asian Paints, Aisher Consulting, and Barefoot College, later on Barefoot College, Delonia. She's a director on the board of Trickle Up India, which is committed to bringing the ultra poor out of poverty using the BRACS approach of poverty, the ultra poor graduation approach. She's a governing council member of India Panchayat Foundation, an independent, non-partisan, pan-India multi-stakeholder platform. She's a member of TIDE General Body, a development organization that leverages technology for conserving the environment and addressing social issues. Sonali is an alumnus from XLRI Jamshedpur and SOAS London. Welcome, Sonali, personal friend, and we work together. Wonderful to have you on this platform. Thanks again for joining, and looking Thank you, forward to. Ram. Great to be Thank you. here. Thanks a lot. Thank you. So moving on to Ashish Shukla. Can we have the spotlight on him, please? Very wonderful. We have another distinguished panelist here today. Ashish Shukla is from Raebareli district of Uttar Pradesh. He's done his master's in sociology from Kanpur University and has worked with the WHO in the polio eradication program for 8 years. During that duration, he played a multidimensional role in training of health workers, planning at micro level, monitoring of immunization campaigns, data analysis, and creating collective platforms for program planning and review with different government agencies. From the last 12 years, he's been working with Quality Education Program, earlier with Prajayatna and now with India Education Collective. He has worked with teachers, educators, and multiple partners working in the education field. According to his experience, transformation in the public education system is not a doable task for any single person or organization, I guess, which is why coalitions are so important. In this domain, everyone has to work collectively, and that's why they have initiated a collective to invite and engage multiple efforts with a common vision. Thanks a lot for joining, Ashish. And we've, of course, been working together with IEC, and it's wonderful to have you here. Thank you so much, Ashish. Thank you. Thank you, Sanjay. Thank you, Sharmishta. Thank you, Ashishi. It's interesting because we have people from different sectors here. So we're going to be listening to their experience and perspectives from different sectors. Ashishi, wonderful work in India Education Collective with with primary school learning outcomes that you're trying to influence. Our next panelist we have is Sukanta Sarkar. Sukanta, can we have the spotlight on Sukanta, please? Sukanta, are you there? I don't see the spotlight on him yet. I hope he's been able to join us. Yeah, it's Yes. coming on. Yeah, Sukanta, maybe we can you can put on your camera, Sukanta, so everyone can see you. Okay. I think we're having some network issues with Sukanta, but I'll nevertheless go and introduce Sukanta here. Sukanta Sarkar, presently working as an integrator in Pradhan. He's been engaged in the development sector for the last 25 years. He's been instrumental in ushering a women-centric community empowerment process
while addressing the issues of farm and farm-based livelihood, mostly in the poorest pockets of eastern and the central plateau region of India. At present, he's been engaged with the idea of promotion of livelihoods through improved local governance on scale in partnership with the state government and other civil society organizations in the state of Jharkhand. He's done a master's in agriculture with specialization in agronomy, and he's also received an Ondiver Fellowship Awards in 2009 from the government of Australia. Sukanta, I'm not sure if Amit, are we having a network issue with Sukanta's connection, or do we have him here or not yet? Sir, he has some network issue, I guess. Okay. So we'll connect with him and sort the thing. Okay. All right. Do we have Pranji yet, or are we still having a network issue with him No, as sir, well? he's still having some issue, but he is on the backstage, but still we are on the call with him. Okay. So should I go Yes. ahead Yeah. and introduce? Okay. Unfortunately, we don't have Pranji here in the spotlight, but however, I'll go ahead and introduce Dr. Chandrasekhar Pran, who was born in an ordinary peasant family in UP, and he began his social work with village mates in the initial years. He has worked in various positions from the year 1988 as a regional coordinator to national director in Nehru Yuva Kendra Sangathan, run by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. In the capacity of National Director of Yuva Kendra from 2004 to 2012, he discharged responsibilities successfully as nodal officer in many national level programs like National Youth Festival, Red Ribbon Express, MG Narega, and Awareness Program. Yeah, I think Pranji has just joined, but I think, yeah, we'll have to mute his speaker. हाँ नमस्कार राम जी नमस्कार प्रांजी, आपके इंट्रोडक्शन हो रहा है. थैंक यू. या गो अहेड शर्मिष्ठा. काफी बहुत मुश्किल के बाद जुड़ पाया हूँ मैं. Okay. दिख रहा है. But thank you for joining, Pranji. Yeah, Okay. go ahead, Sharmishta. Yeah. So We the People of India, the Tatha Project Voters Awareness Program with active participation of more than 80 lakh youth workers of about 3 lakh villages of the country. Ranji has also served as a Chief Nodal Officer of the Panchayat Yuva Shakti Abhiyan, a joint effort of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and Ministry of Panchayat Raj. In his present capacity, Dr. Pran conducts public campaigns for institutional development of panchayats in the form of third government in the country. He's engaged in the work of public awareness and advocacy at the national level to make the form of self-government, Apni Sarkar, given to the panchayats dynamic and effective in the true sense by the 73rd Constitutional Amendment. Dr. Pran has written multiple books on the country's Panchayati Raj system and rural development. Some of them are Yuva Sangathan, Swarup Evam Sambhavana, then Yuva Chintan or Daitva, Pancha Parmeshwar, Nai Ra, and many more. His latest book, released in 2022, titled Uttar Pradesh Gram Panchayat Sadasya Nama, discusses the Gram Panchayat system in UP. Well, I don't have to reiterate the fact that Dr. Pran is very closely associated with working with the Gram Panchayats, and that is, I think, very close to his heart, ensuring that Gram Panchayats become self-sustainable and are empowered in the way that they're supposed to be. Thank you very much for joining. Pran ji, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज पैनलिस्ट में हैं. Thank you, Sharmishta. और प्रांजी, आपका टाइमिंग एकदम सही था. और I just had a thing about पहले सेशन में अनूप जी और सुधीर भी और नरेंद्र नाथ जी भी बोल रहे थे कि they were talking about the importance of समाज, सरकार और बाजार. और जब प्रांजी के बारे में बात करते हैं तो there is no better example of somebody who's worked very closely with समाज or with सरकार, because Pranji is sought after in many committees by the government of India, at the state level, at the national level, by different state governments, and of course with also he works with corporate foundations. So he's truly bringing in a lot of Samaj, Sarkar and Bazar together. So that's really nice to have Pranji here with us. So I think we'll get started. It's already kind of close to 12 o'clock. We are here till about 1:15. The modalities of this dialogue is it's going to be a very informal, very because we all know each other in a sense, and we're all connected with a common purpose.
So here are some pointers that we would be talking about. And the thing is that so that everybody gets a chance to speak, please be very brief when you speak. And we want to do this till for the next 1 hour. Maybe we should speak. We'll have this dialogue for about an hour. So in the end, we have about maybe 10 or 10 minutes for question answers, and maybe we'll have a few minutes to sum it up. Yeah, is that okay with everyone? So if Yeah. that's fine, then I think we'll get the dialogue started. So my first question, I would like to actually bring out this pointer. It's not a question; it's a pointer. Is now each of you I notice have a lot of experience sectorally. Pranji in in local governance. Sonali has gone deep in bringing in organization development experience into building institutions at the local level. Ashraf is wonderfully working in youth collectives. Sukanta with livelihoods, farm-based livelihoods, again trying to scale it up with in Pradhan. And of course, Ashish ji with in the education sector. Uh, Now, if I were to ask you this question, is that in the problem that you're solving, you're all working in coalitions and you work with different partners. If I ask you, what is that one or maybe two, one factor of main important factor that really you want to highlight with from your experience, okay, which exemplifies the working of a coalition? I mean, एक मात्र कारण अगर एक फैक्टर हो सकता है जिससे coalitions are really working are work fine, and I'm wanting you to speak from your experience, right? What was that grand success that was achieved in the coalition because of this one factor? So maybe I can see Sonali there right up front, so I'll maybe ask Sonali to speak again. I'll be not that I'm trying to be cruel to you, but please be brief because I want everyone to get a chance to speak, and we have a lot of pointers to discuss today. Over to you, Sonali. Yeah, thanks, Ram. I think role clarity sounds very mundane, but in a coalition, when there are multiple people working, whose vision, role clarity, and whose vision is driving the intervention. So it's not to say, it's good words to talk about collaborative vision, which is obviously required, but am I clear that, this organization, this person's vision is driving? I also work with panchayats, and for example, in my work, the panchayat's vision is priority. So when I work in partnership with civil society organizations, are they able to prioritize panchayat vision? So I think the alignment of vision, values, and therefore what I bring to the table, what the other partner is bringing to the table, becomes key for a successful collaboration. Yeah, I'll stop. Wow, that's thank you for that insight, Sonali. Let's move to Sukanta. What do you have to say, Sukanta? Yeah, I think two things that is coming to my mind. One is the goal that all the partners want to achieve, which is beyond their individual capacity. And second, I think will be I give them foremost priority is the trust among each other, uh, as understanding the frame Sorry, of Sukanta, I reference didn't of each get other. what was the first one you said again? Can you just I missed that. First one is the goal Goal. is Okay. a meta objectives Right. which they Right. want to achieve, Uh-huh. which individually they can't do. And second is the trust among each other. And I can just highlight one example that our working with the just a grassroots experience with panchayat and the education department, the teachers and the panchayats are always in kind of animosity. But when they start understanding each other and they came to know each other, they have been able to pursue a higher order goal of bringing a more quality education in the panchayat. So that from there I am drawing my experiences that when the goal is very clear and they can't achieve individually and they have a trust on each other. So these 2 points I will highlight. Yeah. Thank you. Thank you, Sukanta. I just want to, sorry, go back to Sonali. Sonali, I know you spoke about the role clarity, but, I would love to hear an example from your working life. I know you worked in Karnataka, you worked in Jharkhand, you worked in many states, Maharashtra, and so on, right? Do you want to bring in a facet, an example of where that role clarity got very well established and that led to the success of what that coalition, Yeah, of what you were so trying to do? I'm connecting it back. I mean, there are many examples, but connecting it back to the work with and our approach to panchayats, because Right. my work is primarily with panchayats. And in our work, we say panchayats' priorities is the vision. So, for example, if I work with partners and we say in Jharkhand, for example, and we work with Pradhan, and
we all sort of finally agreed to that. We went with the priority of saying the panchayats, we should intervene in the areas of drinking water and Narega, for example. But when we did the visioning process and aligned with panchayats, their priorities were agriculture and education. So, are we willing to say, yes, you are the principal stakeholders here, and we abide by your priorities? Even though data may say something else, we will have to go with what your priorities are, and from there start the journey. I mean, we'll encompass everything else, but we prioritize. And so this thinking, right, when you're working with local governments who are governments by their own right, uh, is a bit of a shift from how normally development organizations may work, because they may come with clearer agendas, and this is, we want to work in health, we want to work in livelihoods, we want to work in education. But can we step back and say, uh, now we are working with the local government and their priorities take over? So that clarity of so this alignment. I know that I'm talking about two different points here. The alignment of our thinking when we collaborate with partners, and we've collaborated with who, Mission Samriddhi, with Pradhan, with Azim Premji Foundation, so many organizations, and this is what we say. Can we agree that our goals will be led by what panchayats decide and not what we predetermine? We say that this is what we should do. That's Wonderful, wonderful. Thank you, Sonali. In fact, it kind of goes back to what even Sukanta was just saying about goal and objectives and the larger purpose where we need to be aligned. And I know we'll talk about it a little bit more. I'm just, Narendraji's words keep bringing back when he said this morning about mental models. And what kind of mindsets are we kind of sharing the similar mindsets? Because if you're all divided in our mindsets, no matter, you may structurally try to say this is the change you're trying to drive, but you will not be getting there. I will like to hear from Pranji. आपका क्या विचार है? आपने बहुत सारे coalitions में काम किए हैं. I mean, the whole movement that you're trying to drive for panchayat, for local government, championing it. इसके बारे में आपका experience share करेंगे? वास्तव में जैसे अभी कहा जा रहा है कि गोल कॉमन होना चाहिए, गोल, मैं उसे दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ कि एक तो गोल को लेकर के सहमति बननी चाहिए। सिर्फ कॉमन हो ये एक चीज़ है, लेकिन जब तक दोनों संस्थाओं में सहमति नहीं बनती उस गोल को लेकर के, कभी कभी होता है कि चीज़ें कॉमन होती हैं लेकिन उस पर हम सहमत नहीं होते, मान लेते हैं कि ठीक है ये है, तो एक तो उसकी सहमति बननी चाहिए और फिर हम उसको स्वीकृत कर सकें, दोनों पक्ष एक दूसरे को एक तरह से उसको स्वीकृत कर सकें, तब तो जाकर के ये चीज़ें शुरू होती हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संबंधों में पारदर्शिता। जो रिलेशनशिप बनती है ना, वो जितनी पारदर्शी होगी दोनों पक्षों की, या जो लोग भी शामिल हैं उन सब के अपने रिलेशनशिप में जितनी पारदर्शिता होगी, उतने लेवल का विश्वास बनेगा। जो ट्रस्ट की बात अभी कह रहे थे ना, ये ट्रस्ट तभी बनता है जब पारदर्शिता होती है। एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ विश्वास इसी के साथ बनता है। पता चले मेरा कोई हिडन एजेंडा है, मैं कुछ छुपा के काम कर रहा हूँ, दूसरा कुछ छुपा के काम कर रहा है, तो दोनों के बीच कोई विश्वास नहीं बनता। विश्वास नहीं बनता तो मिलान भी नहीं हो सकता, फिर हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते और मिल करके काम भी नहीं कर सकते। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हर आदमी अपनी ओनरशिप चाहता है। जब एक साथ मिलता है तो सबको लगे कि ये उसका है, उसकी ओनरशिप उसमें महसूस होनी चाहिए। और ओनरशिप बनती है जब आपस में परस्पर संवाद हो रहा हो, संवाद चल रहा हो लगातार, और दूसरा कि पार्टिसिपेशन हो रहा हो, अर्थात हर लेवल पर हम उस पूरे प्रोसेस में, चाहे वो डिस्कशन का एरिया हो या डिसीजन का एरिया हो या एक्शन का एरिया हो, तीनों एक्शनों में, तीनों लेवल पर जब हम एक तरह से पार्टिसिपेशन की स्थिति में होते हैं, तब ओनरशिप बन जाती है सबकी। जितने उसके साथ पार्टनर्स होते हैं, सारे पार्टनर्स की ओनरशिप बनती है, तो मिलान या ये हमारा कोलैबोरेशन बहुत अच्छा आगे निकल करके जाता है। दूसरे फिर ये होता है कि इसकी लगातार निरंतरता भी बनी रहे, तभी ये बहुत होता है कि इसमें कंटिन्यूएशन ये न रहे, बल्कि वो जो संवाद की निरंतरता है वो बराबर बनी रहनी चाहिए, तो जाके होता है। बड़े सरल शब्दों में जो मुझे अनुभव है इस चीज का। बहुत सुंदर प्रांजी, थैंक यू, दैट इज वेरी इंसाइटफुल। आई थिंक you're speaking about relationship, and we did hear about this morning also the power of relationship and connections, the power dynamics जो होते हैं when the relationships are very strong, how authority is shared, how decisions are being made very transparently,
You bring up a very, very important point. We'll move on next. I would like to hear Ashraf. Are you there? I know you lost your connection a little while ago. If you're back, can you share your experience about what is that one or two really important attributes or factors that drive coalitions to success? How does success look like when this factor, is present in huge magnitude? Ashraf, are you there? Yes, Ashraf, I can see you. Ashraf, can you hear me? I think Is there a connection issue or is it mine? no, we can hear you, No, no, Ashraf. we can hear We can you. hear you. Go ahead. Ashraf, can you hear us? I think we are able to hear her, but she's not able to hear us. Looks like it. So Ram, maybe you can move on Yeah, to yeah. somebody else, Amit, and you we can just maybe bring Ashraf. Maybe just ask her to join back, and then I think it should come back. We'll just move on to Sanjay Singh. Sanjay ji, आप share करना चाहेंगे? there is a connectivity issue even with him. I'll just give it a second. Maybe if his connection is coming back. Ram, a quick clarification. There are some questions to be answered on the chat box, or we will be taking those questions later on. We'll take them a little later. Let's just go with the flow right now, and we can take them later. Ram is not here. Yeah, Ashraf, Ashraf and Sanjay. We'll just wait for Amit or Rashi to. I think Ram is not here. Am I correct? No, Ashraf, we are all here. Can you hear us now? Ashram, can you hear us? I can hear you. Yes. Yeah, Ashraf, we are all there. And please, the first question I Want me wanted. to, Yes, you yes, want me to please. share? Yes, I please, think I Ashraf, go missed the ahead. transition. Okay. Please go ahead. Sonali, I think you're saying Ram is not showing up on my screen. Yeah, okay. Now I'm getting. Okay, I'll continue. Sorry, maybe there was a gap. I couldn't hear anything. So, about what I can share very briefly is like I think बाकी लोगों ने जो भी शेयर किया मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं थोड़ा सा उसको अपने डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज में शायद कहना चाहूँगी कि हम लोग कलेक्टिव्स को अगर इस तरह से देखें इट लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ वी स्ट्रक्चर इट हाउ वी see the whole thing so it's like another organism and in that we say that if we काफी टाइम हम लोग देखते हैं कि कलेक्टिव्स केवल व्हाट इट नीड्स टू डू पे फोकस रहते हैं और जैसे प्राण जी ने भी कहा देयर इज अ रिलेशनल एस्पेक्ट टू इट व्हिच इज so important so how we look at it is the seeing being and doing like how do we layer the whole everything that we are doing in seeing being and doing which means as a whole how do we see be and do and also in the microcosm in the many multiple layers and the smaller units of a collective the same thing being and doing is happening so it's not just one giant infrastructure but there are micro infrastructures where the uh, uh, structure is placed and in the seeing I think the one most important thing is I think for me most of the collectives the whole thing is constantly seeing together इट्स नॉट कि हमने चार्टर बना दिया और अब ये है तो पहले तो चार्टर कैसे लिखा गया कुछ लोगों ने लिखा सबने लिखा हाउ डू राइट अ चार्टर विद 100 or 200 organizations I mean that itself is an exercise and how do you constantly see together so it's not now being seen only by the facilitariat or a governance group how does everybody see where we are headed together मुझे लगता है वो process is और दूसरी जो हम कहते हैं being and I just want to a little bit share is you know many times to recognize that the collective is an outcome itself the being of the collective is an outcome. It's not about only what we do, but to me, the power of it is in the fact that we are organized. And the power is not for the want of power, but it is for is the love, is the power of love. So the other piece I want to bring is this whole collectivization is not about
mostly it's defined as social power, political power, position power. But how about seeing it as also actually the power of love? And so for me, the being, I think for us, the being is really, really crucial. And if the being and the seeing happens together, the doing becomes a lot more easy. So yeah, I want to stop. So, Thank Ashraf, I mean, you really touched a very beautiful thing about the Yeah, power of love, right? I want you to just give Ram, any, uh, Ashraf. Ram, my network is So, can you hear me? yeah, Yeah. yeah, yeah. Yeah, Sukanta, 1 second. I'll just come to you. I was just wanting to speak to Ashraf again on the power of love. You want to share any facet of from your experience of how this has really come and played a very important role? Vartalip Coalition, Pravah, Community. Share an example of how this is really shaped up. Ashraf, are you able to hear me? I think we'll come back to Ashraf. There is definitely a technical problem. Uh, yes, Sukanta, you wanted to say something? No, no, I think I think it was what Sanjay Singh. yeah, Sanjay was. Okay, Sanjay. So Yeah. so Sanjay, I So, think can you hear जी us जी now? या Yeah. राम, मैं उस समय नेटवर्क के इशू के कारण मैं आपसे नहीं जुड़ पाया था. आई मीन स्पीक इन हिंदी. सो Please, please. बेसिकली आपने जो कॉलेशंस के बारे में जानने की जो बात करी और जिसको प्राण सर ने आगे बढ़ाया, बेसिकली मुझे जो लग रहा है कि मैं एक कॉलेशंस को सक्रिय रूप से चला रहा हूँ. पिछले 10 साल से अधिक का अनुभव है जलजन जोड़ो अभियान का. उसके आधार पर मुझे लगता है कि कॉलेशंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम एक आइडियोलॉजी की बात भी कर सकते हैं. मेरा अपना अनुभव है, ये मेरी खुद की मान्यता है कि एक विचारधारा निश्चित तौर से कॉलेशंस को आगे ले जाने की कोशिश करती है. कई बार हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन कॉलेशंस के साथ साथ हमारा कई बार हमें जहाँ पे सफलता मिल रही है वो लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम टारगेट कहें या फिर हम अपना मिशन कहें. ये एक अगर नहीं होता, बहुत सारे कॉलेशंस में क्या है कि लक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं होता, और जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है तो उसके कारण क्या है कि हम गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन हमें जहाँ पहुँचना है हम वहाँ नहीं पहुँचते हैं. तो ये जो मिशन मूड में जो काम होता है वो उसी में होता है कि जब हमें पता है कि हम वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं. एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है. यूँ तो बहुत ही सरल ढंग से लोग कहते हैं क्या एक्टिविटीज है, लेकिन आपकी गतिविधि क्या, उस गतिविधि में क्या को जोड़ पा रहे हैं कि आपकी विधि क्या है, क्या बराबर का प्रतिनिधित्व तो है. कॉलेशंस में 2-4 लोग ही तो हावी नहीं हो रहे हैं. कॉलेशंस में क्या सबको बराबर की भागीदारी मिल रही है क्या? और अगर भागीदारी मिल रही वो आपके सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि वो कॉलेशंस के हर मेंबर को ये फीलिंग है कि नहीं, हम जो बोलेंगे वो हमारा सुना जाएगा और हमारे निर्णय की यहाँ पर महत्व दिया जाएगा और उस निर्णय की बात मानी जाएगी. तो ये जो विश्वास है ये आगे बढ़ने में मदद करता है. मैं अपने उदाहरण से बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में हमने अपने कुछ साथियों के साथ अपने कॉलेशंस की शुरू की थी. आज देश भर के 1600 से अधिक संगठन, व्यक्तिगत व्यक्ति, लोग, समूह, यूनिवर्सिटीज, IITs, IIM, ये सब हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं कि हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि हम बात कर रहे हैं, हम देखना क्या चाहते हैं, और वो बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि स्मार्ट आपका गोल अगर है तो उस तरह से सफलता मिलती है. तो मैं यहाँ पर अपने कॉलेशंस के अनुभव से ये कहना चाहूँगा कि कॉलेशंस का अनुभव सिर्फ एक अनुभव जो है वो ये है कि हमारे निश्चित तौर से हमारे बीच में स्पष्ट रूप से हमारे उद्देश्य की स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है. थैंक यू सर. Thank you, Sanjay ji. And again, you talked about trust and you talked about the clarity of the purpose. Crystal clear होना चाहिए आपका purpose. And I just remind once again कि आपका सब experience इतना rich है. आप पानी में काम कर रहे हैं, जन जल जोड़ो अभियान. Please share more from your background, from your experiences. Okay. While it's nice to hear, the factors, but when you're sharing more from your personal experiences, आपके क्षेत्र में और भी आपका बात और भी स्पष्टता से बाहर आएंगे. सो विल कम बैक टू यू संजय जी, एंड आई विल नाउ मूव टू आशीष शुक्ला जी, इंडिया. ओके. तो बिल्कुल राम, अभी तक जो हमारे साथियों ने जो बातें कही हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, और हम अपने अनुभव से अगर कहना चाहें
तो हम ये कहेंगे कि विजन अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी की प्रैक्टिसेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो हमें लगता है ये बहुत कारगर है। पर विज़न लेवल पर अगर हम अलाइन्ड नहीं हैं, तो वो ज़्यादा आगे तक कोएलिशन जा नहीं पाता है। तो थोड़े समय के बाद उसमें फिर कठिनाइयाँ आने लगती हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से इसको देखा कि कुछ ऑर्गनाइजेशंस ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि स्कूल अच्छा होगा, तो क्वालिटी एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उसको अच्छे से वातावरण मिलता है। पर हम उनके साथ इसलिए कोएलिशंस अच्छे से कर पाए क्योंकि हमने साथ बैठकर वो सपना देखा कि क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमको रुक जाना है क्या? उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? तो अगर उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे को क्वालिटी लर्निंग डिलीवर हो पाए, वैसे फैसिलिटेट कर पाएँ स्कूल्स। तो अगर वहाँ तक देख रहे हैं तो फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं रुक सकते। तो उस तरह से जब हम विजन अलाइनमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है बहुत दूर तक साथ चल पाते हैं और एक जैसे जो है परिणाम निकाल पाते हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ कि जो हमारी कुछ-कुछ प्रैक्टिसेज़ होती हैं, जो कुछ प्रोसेसेज़ होते हैं, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि जहाँ पर हम चीज़ों को छोड़ते हैं, वहाँ से आगे किसी और को वो जो है मसाल लेकर चलना होता है या किसी और को उसको बढ़ाना पड़ता है। तो अगर उनको इंस्टीट्यूशनलाइज़ नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ़ इवेंट्स या एक्टिविटीज़ बनकर रह जाएँगी। फिर वो मेन स्ट्रीम सिस्टम कैसे एडॉप्ट करेगा, लोग उसको कैसे समझ पाएँगे? तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने अनुभव से कहना चाहेंगे कि काफ़ी की रोल प्ले करती हैं। राम। Thank you, Ashish. This is, I think, the first point was more or less similar to what everybody have been talking about, purpose alignment. But ये दूसरी point जो आपने, what you have established is the institutionalizing the process. And NGO sector में, I think, many a times we are more passionate people, but sometimes the processes are not very strengthened and they're not institutionalized. People get carried away by personalities rather than the actual process of functioning. This is a very valuable point. Thank you. Sharmishta, what do you think? Absolutely. And but having heard from everyone, I also wonder as to why is it that coalitions have not been the norm? Why is it that they haven't always been successful? So I'm just kind of playing the devil's advocate here, and मैं आप लोगों में से सभी से पूछना यही चाहूंगी कि आप में से आज जहाँ आई मीन जो लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं उनमें से किसी को लगता है कि does anyone among you think that collaborations are irrelevant and they are useless? Do we understand as to why, by and large, collaborations have not been a great success? And what do you think has led to some of them, or many of them for that matter, experiencing, I would say, I wouldn't call it failure, but at least not success for sure. क्यों ये देखा जाता है कि बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल साथ में तो आ जाते हैं काम करने के लिए बट फिर आगे ये हो नहीं पाता है ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी लिसन टू अ लॉट ऑफ दिस इन द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ कि what is necessary for a coalition to succeed, but why is it that they stop becoming a success, and do you think कि coalitions are irrelevant? ये मैं पूछना चाहूंगी आप सभी से. And maybe I can start off with Sonali. Sonali, do you think that coalitions are irrelevant? Well, obviously not. I don't think that we can achieve by ourselves what we can achieve with a group. There is no doubt about that. However, you have to be secure in your own position, and you have to be capable of what you are wanting to deliver. So I think the strength that you bring into a coalition has to be well founded. So if we are insecure as an organization, as a person, then I think to collaborate and be entering into a coalition is always going to be a problem. Uh, but the next thing is security and ego. So I can be secure in my work, I can be confident of my work, but then if I am suffering from a large ego, then that will then inhibit me from listening, receiving, and that obviously comes in the way of collaborations. So, but both is important. Huh? It's not just about giving in and listening. It's also about standing on your own and saying, "This is what I believe in." So there's a very thin balance that we have to look at.
Any personal examples you want to share, Sonali? I mean, you've seen this. Why you would have seen a lot of coalitions, and you would have seen a lot of people with ego and things breaking down. You want to share anything? Well, actually, I just saw a question on the chat, and I'll take that on Okay. because somebody said who in the panchayat, and that I've heard many times from my in my work as to how can you actually put faith in an organization which is corrupt, which is the stereotype for panchayat is corruption, is political, etc., etc. Now, I come from a very different sort of belief that when you invest in people and organizations, then the way they behave will be very different. However, I also stand corrected in terms of how much we need to engage with communities and not just the representatives of communities. So I think I have to first be solid in what I do, and I also have to start listening. So therefore, in fact, I work is now also co-opting Gram Sabhas and communities, etc. and all that. So both is important, Ram. What we are bringing to the table and also listening to people from outside. Yeah. Sure. And I really like the part about ego also that you mentioned, Sonali, because one should not be coming into a coalition with the idea of I know it all. I mean, one should also realize that there's a lot of learning and unlearning that may happen, especially when you're going to be working with multiple other partners. So I think that's very important, and I think that's a very critical point that you brought up, that one should not be coming in with this huge ego and thinking that, oh, what I bring to the table is only what is needed. And especially when we are solving very, very sticky problems which we cannot Right. solve ourselves. Yeah. Absolutely. True, so true. And so next, maybe Ashraf, would you like to? I know, I mean, I think this is the question itself probably is not very relevant, but I still wanted to figure out as to why is it that a lot of coalitions actually end up not working. I Actually, I mean, we are disagree, Sharmishta. It's very relevant. Huh? It's very relevant because many coalitions don't work the way they're supposed to. And I really want to know why they're not working. What correct. is that binding force or that big frictional item that is not letting them deliver and live to the true power and value? Ashraf, actually, you were saying. No, yeah, and when you ask for examples, Ram, very difficult because many of us are in coalitions and very hard for it's very hard work. We know that, and to say that anything has failed is also very hard for us to do because I feel it will always be work in progress, and I feel the coalitions that particularly where we all come, many of us come from, the coalitions will have very diverse thinking. It's just because we may have a common mission doesn't mean that everything is very straightforward. So how to build this inclusive conversation, and the biggest thing is how to decide things together, even when we hold different opinions. We may have a same mission, but how do you do decision making together? And I think that's when people feel excluded, included, and they start falling out. But so taking examples is hard because then taking names. But I want to take because you asked and it makes it more relevant. Maybe just a example of a coalition that we started some years ago, many years ago, that I was part of co-founding. It was called Beyond Zebra, and it was about looking at things beyond the black and white. Like everything is seen as black and white, and it was a one-stop coalition that would provide life skills and social education offerings to schools. This was a long time back when we were doing active citizenship education, and it had members from leading organizations, including Prava, Development Alternatives, Butterflies, Toxics Link. I mean, many organizations at that time which were working on CSCI, all working on education at that time. And one thing that makes I think coalitions collapse is leadership. Like do how are we leading? And at that time we were leading it. We had incubated it with everybody, we as in Prava, and we were very keen that the leadership is shared quickly. Okay, we were very this, okay, we will not hold this, and we will do rotating leadership. And I think one of the things that happened was, in the hurry to rotate leadership, in the hurry to do rotational secretariats, it just sort of fizzled out. And I feel at some point that understanding that the leadership to begin with must take it to some level before the
anxiety of showing, okay, now. So some of this is a very difficult challenge. Many people don't want to hold the whole leadership. I mean, Sonali said, we are worried about our expression of our ego, expression of power, and you do want to have distributed leadership. But when you and how you create that distributed leadership becomes very critical. If you do this in a hurry, and if you just do it, okay, now we will rotate leadership, it doesn't work. It's about capacity, competency, and commitment, to really actually be a little scientific about it. It's not just because I'm there, I'll do it. So, very, very honest conversations about people's and organizations' intentions, motivations, and capacity. I think competence is an important conversation that we must have. It's not just I have to do. And one more thing I want to say is about missions. Of course, I think one difficult paradox we have to sort of manage, all of us do, is that uh, this whole thing of ये जो primary and secondary membership. I think to recognize that if it's organization coalitions, mostly I have a primary membership with my organization where I spend 90% of my time. The coalition where I spend 20% or 10% of my time is going to be my secondary membership. To recognize that in the coalition, I think is very critical. Sometimes we start loading members with too much responsibility. We matlab as in the collective. I think for everyone to recognize that there is an institutional primary membership, sometimes we just don't want to say that. We say everything is equal. And I think those are conversations that must be on the table, and recognized. It's a paradox and it has to be walked. Till we do that recognition, I think the fight is always there कि आप कितना टाइम दे रहे हो और क्यों नहीं दे रहे हो, और फिर वो कोलैप्स हो जाता है, वो लड़ाई में ही कोलैप्स हो जाता है कि we need members to do more. I think that ease and peace, that members will do what they can, and everyone has to inspire each other is most important as well. Thank you for sharing that. I think I'm glad you took up that example, which brought it out so clearly. Yeah, beautiful. I think even the part about being honest Yeah. and understanding as to why something is working and not working, and being able to, and this part about primary membership and secondary membership, I think is very important, because like you said, sometimes you just don't know. Maybe you're just asking too much from someone, and it may just collapse because of that. We all struggle to say this, right? When you want to say no, and you'll be compelled to say a yes, and we don't know when to say no, and we just take on responsibility without really being able to. We don't have that time. We don't have that bandwidth, and yet we keep on saying yes, yes, yes. Excellent. Let's move on. हाँ, अगर फिर मैं आशीष से पूछना चाहूंगी कि आपके आपके विचार क्या हैं इस पे, क्यों कोalitions सच में सक्सीड नहीं कर पाते हैं? तो शर्मिष्ठा, हम लोगों का जो अनुभव रहा है उसमें 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से हम लोगों ने ऑब्जर्व की हैं, एक्सपीरियंस की हैं। एक तो ये है कि जब हम कोई इलेक्शंस इनिशिएट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ डिफरेंट थॉट्स होंगे। तो वो जो इंडिविजुअलिटी है एक-एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कैसे साथ लेकर बढ़ना है, क्योंकि जैसा पहले था एग्ज़ैक्टली सब कुछ वैसे ही आगे नहीं जाना है। तो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द मिशन, समय-समय पर बैठकर, मिलकर, कॉमनली, कलेक्टिवली इसको देखते रहना कि क्या कारगर है और क्या नहीं काम कर रहा है। जो नहीं काम कर रहा है उसको बदलना, जो कारगर है उसको और मजबूत करना। ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो मिलकर करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम एक सेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा देर तक वो बहुत सारे लोगों को कनेक्ट नहीं रख पाता। और फिर एक समय के बाद ऐसा होता है लोग डिटैच होना फ़ील करने लगते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम सभी सीएसओ जो है वो हम लोग यूनिवर्सल नहीं है, मतलब सब जगह नहीं, हमेशा नहीं थे और ना हमेशा रहेंगे। तो अपने काम से जब हम इस तरह के प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिस्टम थिंकिंग को फोकस करते हुए हों। अगर हम सिम्टम्स को एड्रेस करते हैं या कभी-कभी क्या होता है कि कुछ तुरंत वाले जो असर दिखाने वाली चीज़ें हैं उनको हम फोकस करते हैं तो फिर वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक जाते नहीं हैं। तो उस बिग पिक्चर को ध्यान में रखना कि ये आगे कौन इसको बढ़ाएगा, इसको सिस्टम कैसे लेकर चलेगा। तो जो स्केलेबल, सस्टेनेबल वो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसमें, जिसको हम देखकर चलने की ज़रूरत रहती है। कई बारी वो रहता है, बट ये जो टाइम टू टाइम रिविजिटिंग का जो प्रोसेस है ना, वो ना होने की वजह से वो बेसिक वैल्यू से कंप्रोमाइज़ होने लगता है या फिर हम बंद कर रह जाते हैं। तो वो एक डिफ़िकल्टी के रूप में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। जी। आपके अनुभव में कोई ऐसा कोalition या कोलैबोरेशन था जो
कुछ साल के बाद शायद आगे फिर बढ़ नहीं पाया, कि ऐसे कुछ है क्या जो आप बता पाएंगे? हाँ, हम लोगों ने कोई 7-8 साल पहले एक कोएलिशन इनिशिएट किया था उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल की बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर, कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन को अच्छे से गौर करेंगे अपने काम में। और देयर लोकल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रांग, उनका डेप्थ है ग्राउंड पर एक दो कदम आगे बढ़ने के बाद में ज्यादातर लोग जो है उससे जुड़े रहे कि हम तो सिर्फ गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट के साथ ही हैं। वो गर्ल चाइल्ड इनरोलमेंट कैसे बिग पिक्चर को कंट्रीब्यूट करता है, हमको वहां तक तो नहीं। अगर हमारे एफर्ट से, हमारे इनिशिएटिव से अगर बॉयज इनरोलमेंट भी हो रहा है, या सिर्फ इनरोलमेंट नहीं, उनका रिटेंशन भी हो रहा है, या उनकी क्वालिटी लर्निंग को भी हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बोनस है, वो आपकी अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा है। तो उतना फ्लेक्सिबल रहना कि हम मूव कर जाएंगे। तो फाइनली वो कोएलिशन बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, और इनिशियल स्टेज पर ही उसमें बहुत सारी तकलीफें आ गई, क्योंकि जो जहां से वो फंडिंग रेज कर रहे थे, उनके बहुत ही सीमित कहेंगे कि वो था, उद्देश्य था कि हमको सिर्फ इसी को फोकस करना है। तो कोएलिशंस तो हम लोग इसीलिए इनिशिएट करते हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग कैसे उनको मैक्सिमम इम्पैक्ट्स में ले जा पाए, जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पैरेलल सिस्टम उस तरह का, तो हम तो खुद सरकार या वैसा नहीं हो सकते, अल्टीमेटली तो सिस्टम को ही करना है। तो कैसे हम वो उदाहरण प्रस्तुत कर पाए जिसको आगे लेकर बढ़ाया जा सके, तो वो हम लोगों का एक एक्सपीरियंस रहा कि वो ज्यादा आगे नहीं जा पाया। जी, बिल्कुल सही, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना और लेके आना कोलैबोरेशंस और कोalitions में भी इतना ज़रूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट बी थिंकिंग ऑन जस्ट वन ट्रैक अलोन। अगर कुछ और एक्सपैंड कर पाए या कुछ, देन आई गेस फिर वो विजन का भी इशू हो जाता है, कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो मे बी यू नॉट रियली एक्सपैंडिंग फर्दर ऑन दैट, तो कहीं ना कहीं फिर वो कॉमनैलिटी नहीं रह पाता है। I also heard two things, Sharmishta, what he said. No, I caught on to a thing, lack of systems thinking. Yes. He mentioned about the importance of having systems thinking. Yeah, or and also not addressing just symptoms. Not addressing symptoms. बिल्कुल, not addressing symptoms. Systems thinking important है. Or this sounds to be a repeat, but not having the big picture. Big picture, when everyone is not having that big picture, everyone is being pulled in different directions. शायद. Absolutely. प्राण जी, आप तो बहुत सारे कोएलिशंस के में मैंने तो जब विद्यार्थी जीवन से ही इस प्रयास को शुरू कर दिया था, और मेरे ख्याल से जब मैं एमए में पढ़ रहा था, एमए से पहले भी, तो हमने तो शुरू ही जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का शुरू ही किया था, और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ था, राष्ट्रीय युवा परिषद। वो उस समय 1983, 84, 85 और उस समय एक लंबे उस समय का था वो, और उसमें लगभग 1400 यूथ ऑर्गेनाइजेशन जुड़े थे। उस समय हम ज़्यादातर लोग विद्यार्थी थे, सरकार में आने के पहले की स्थिति थी, और अभी तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो देश के हैं सिविल सोसाइटी के, वो सब उसमें शामिल थे। हम सारे लोग मिल करके उसको आगे ले गए थे। हाँ, वो ये था कि एक सीमा के बाद वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के क्या कारण थे, अभी उस पर आते हैं। दूसरा, सरकार में रहते हुए 25 साल तक लगभग यही काम किया। कभी भी एक तो सरकारी ढांचा था, उसके साथ तो काम करते थे, और नेहरू युवा केंद्र तो वैसे ही मानते थे कि 3 लाख यूथ क्लब का फेडरेशन है। ये माना जाता था कि 30 लाख यूथ क्लब है वहाँ, 3 लाख यूथ क्लब थे, और 620 जिलों में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस थे, उनको भी एक तरह से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। हमारे यहाँ तो सारे लोग कोऑर्डिनेटर कहे ही जाते थे, ऊपर से नीचे तक सब कोऑर्डिनेशन का ही काम करते थे। बाद में अभी तीसरी सरकार अभियान के रूप में फिर से सिविल सोसाइटी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उसी तरह का काम है। वास्तव में जितनी चर्चाएं हुई कि वो सारे क्या कारण होते हैं या क्या है जिसकी वजह से ये सब, देखिए कोई चीज़ एकदम तो बंद नहीं होती, कुछ ही लोग अलग होते हैं, कुछ ही लोग जुड़ते हैं। ज़्यादातर तो इस तरह के जो होते हैं उनमें जुड़ना और निकलना ये बराबर एक प्रोसेस होता है, चलता रहता है। बहुत सारे संगठनों में देखते हैं कि एक शुरू हुआ, हाँ कभी ऐसा आता है कि ख़त्म जब होता है तो सामान्यतया लीडरशिप जब उसकी ख़त्म हो जाती है। मैंने ये देखा है कि जो चूँकि इस तरह के एक लीडर होता है, एक जो पहल करता है, लीडर कह लीजिए या पहल करता कर लीजिए, जिसने शुरुआत किया था इसके, और शुरुआत जो करता है उसके साथ उसकी, जैसे कहते हैं उसका सपना होता है उसके साथ, तो अपने सपने को जीता है,
बाकी लोग जो जुड़ते हैं उनको वो सपना दिखाने की कोशिश करता है, तो कुछ में सपना पैदा हो जाता है, कुछ में सपना नहीं पैदा हो जाता, कुछ अपने छोटे छोटे उद्देश्यों और छोटे छोटे मुद्दों के लिए उसके साथ जुड़ जाया करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो सबसे, अब अगर हम ओवरऑल इसका लें और फिर बाद में मैं एक दो उदाहरण भी दूंगा जिसके साथ रहा, क्योंकि जब सरकार में रहते हुए हमने एक बहुत बड़ा इस तरह से कोलैबोरेशन हुआ था जो जिसको रेड रिबन एक्सप्रेस कहते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस में सरकारी संस्थाएं भी जुड़ी थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी थे, यूएन एजेंसी सारी जुड़ी थी, सिविल सोसाइटी बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा था, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए थे। मेरे ख्याल से अशरफ जी उससे तब जुड़ी थी, अशरफ जी ज्यादा अच्छा, मैं उसका इत्तेफाक से नोडल ऑफिसर बनाया गया था, फील्ड लेवल की जो रीच थी उसका मैं ही नोडल ऑफिसर के रूप में देख रहा था। और वो एक दो दिन के लिए नहीं था, वो एक उद्देश्य को लेकर पिछले एक साल तो कंटिन्यू चला ही प्रोसेस, और एक साल उसकी तैयारियां चली थी। तो एक बहुत बड़ा वो एक जमात खड़ी हुई थी, एक बहुत बड़ा मिलान या आप कहिए कि सम्मेलन बना हुआ था बहुत सारी सिविल सोसाइटी का, और उसके बड़े अच्छे मीठे अनुभव भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, कटु अनुभव भी हैं। बहुत सारे प्रोसेस से मैं गुजरा था उसके नोडल। लेकिन दो तीन चीजें ये होती हैं कि एक बात आ रही थी कि जैसे बार बार हो रहा था कि पारदर्शिता, जिसकी विश्वास, जिसमें ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट हमेशा पारदर्शिता से आता है। तो वो जो संबंधों की पारदर्शिता है वो जब टूटती है, किसी एक संस्था के साथ भी टूटती है तो वो संस्था अलग हो जाती है, एक बड़ी जमात के साथ जुड़ती है तो जमात अलग हो जाती है। ये सब सामान्यतः होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज बहुत मायने रखता है कि ये सही है, जैसे संजय जी भी कह रहे थे और सोनाली जी ने शुरू में ही कहा था कि हमारा गोल या विचार एक जैसा होना चाहिए। वास्तव में एक जैसा विचार और गोल सब नहीं होते, सबके होते हैं। किसी मुद्दे पर हम जुड़ते हैं, कुछ खास गोल के लिए या कुछ खास चीजों के लिए ही जुड़ते हैं। 100% सारे गोल सबके एक जैसे नहीं हो सकते, और ये कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें जो बार बार कहा जा रहा है कि स्वीकृत का भाव होना चाहिए, अर्थात कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो मेरे अपने माइंडसेट या हमारे विचार से अलग है, तो हम फट से मान लेते हैं कि वो हमसे जुड़ नहीं सकता और हम तुरंत उसको रिजेक्ट करते हैं। ये रिजेक्ट करने वाला भाव नहीं होना चाहिए। वास्तव में हो सकता है उसकी तो ये जो स्वीकृत, हम जहां अस्वीकृत का भाव रख लेते हैं या बीच में हम साथ काम करते रहते हैं, अचानक किसी का एक विचार आता है जो अपने तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन हम मान लेते हैं हमारी जो अपनी धारणा है उसके आधार पर मानते इसी यही रास्ता होगा, तो हम फट से उसको अस्वीकृत कर देते हैं, वो अलग हो जाता है। जैसे अस्वीकृत होता है वो हमसे अलग हो जाता है। तो स्वीकृत का भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो जब हम उसे स्वीकार करेंगे एक सम्मानजनक तरीके से, तो निश्चित रूप से हम फिर उसको उस रास्ते पर ला सकते हैं या उसको हम ठीक से समझ सकते हैं। दूसरे एक अहम की बात आ रही थी, जो कहा गया था कि अहम आ जाता है। अहम क्या कहें, इसे हम कहें पहचान का संकट। देखिए सारे सिविल सोसाइटीज या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें पहचान का भाव रहता है। सब चाहते हैं भाई ये काम कर रहा हूँ तो कम से कम मेरी पहचान तो हो, व्यक्तिगत नहीं तो संस्थागत पहचान तो हो। तो बैनर का मोह होता है। मैंने रेड रिबन एक्सप्रेस में इसके बड़े संकट देखे थे। मैंने यहाँ तक देखे थे कि राज्य सरकार भारत सरकार का बैनर हटा देती थी, भारत सरकार का बैनर राज्य सरकार, नेहरू युवा केंद्र का बैनर अलग हटा दिया जाता था, एनएसएस वाले अपना बैनर ऊपर टांग देते थे। मतलब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन और बैनर का ऐसा चलता था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि वो जो लीडरशिप होती थी ना उस लेवल पर, कैसे उसको मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ कि वो समन्वय ही नहीं करती थी, वो सामंजस्य स्थापित करती थी। देखिए समन्वय और सामंजस्य में अंतर होता है। समन्वय तो समान विचारधारा, समान लाइक माइंडेड लोग जो एक तरह के हैं तो एक साथ उनको लेकर चलना, ये समन्वय है। लेकिन कभी कभी जो अलग अलग माइंडसेट भी होता है, विपरीत होते हैं, प्रतिकूल होती हैं चीजें, लेकिन कुछ चीजों के लिए, लेकिन उनके बीच में समन्वय स्थापित करके सामंजस्य, उसके बीच में सामंजस्य बना करके फिर उस गोल के साथ तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेड रिबन में इसको मैंने बहुत झेला था। बार बार ऐसे तमाम तरह के लोगों के बीच में सामंजस्य बनाना,
जा करके फील्ड में उस चुनौती को स्वीकार करना, फिर बैठा करके लोगों को करना, ये बड़ा, और उससे वो टूटने नहीं पाया, चलता रहा। मतलब वो चला और साल भर उसको चलना था, पूरे देश में उस ट्रेन को घूमना था, जगह जगह बहुत सारी एक्टिविटीज होनी थी। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा प्रोग्राम शायद आज तक मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जो बहुत सारी संस्थाओं को नेशनल इंटरनेशनल लेकर के चला था, और बहुत चुनौती भरा था रेड रिबन एक्सप्रेस का काम। तो एक तो वो बहुत देखा, दूसरा अभी इधर जो अहम का भाव, और वह मैं इधर देख रहा हूँ बहुत सारे युवा, राष्ट्रीय युवा परिषद में भी और तीसरी सरकार में, देखिए जुड़ना और अलग होना ये एक सहज प्रोसेस है, इससे कभी भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। तमाम लोग आते हैं, जब आदमी आता है तो कहता है कि मेरा वही उद्देश्य है, लेकिन सब अपने अपने एक लिमिटेड दायरे में अपने अपने उद्देश्यों को लेकर के, अपने अपने हितों को लेकर के उसमें शामिल होते हैं। ये बड़ा यथार्थ है, इसको मान के चलना चाहिए। और कभी कभी जब उनको लगता है कि कुछ, उन्होंने तो अपने आप विजन बना लेते हैं ना, अपने आप उसका तय कर लेते हैं कि इसमें हमारा ये लाभ होगा, लेकिन जब वो लाभ नहीं होता, कुछ देर तक देखते हैं तो अलग हो जाते हैं बड़ी सहजता से। तो ये आना जाना इसमें लगा रहे, लेकिन इसमें कुशलता यही कि कैसे हम वो सामंजस्य बना सकें, कैसे हम सबका सम्मान कर सकें, और विशेष करके जो लीडरशिप में हैं, जो संस्थाएं लीडरशिप में हैं, जो लीड कर रहे हैं, लीड मीन्स जो पहल कर रही हैं, जिनके बलबूते ये चीजें खड़ी हो रही हैं, जिनके पहल से ये चीजें खड़ी हो रही, उनकी पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि वही केंद्र बिंदु होते हैं जो सबको जोड़ते हैं। और अगर केंद्र बिंदु गड़बड़ा गया या केंद्र बिंदु पर विश्वास उठ गया तो बिखराव बहुत तेजी में हो जाता है, और वो चीजें हो जाती है। राष्ट्रीय युवा परिषद लीडरशिप के अभाव के बाद फिर खत्म हो गया था। तो ये कई चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और ऐसी चीजों में ये गड़बड़ होता है। बाकी तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक जुड़ाव बना, एक मिलान बना या एक कोलोशन बना तो वो खत्म ही हो जाएगा अचानक। वो प्रोसेस चलता है और लंबे वक्त तक चलता है। थैंक यू प्राण जी, बहुत बहुत सुंदर पर्सपेक्टिव आपने दिए हैं। धन्यवाद। ये आई मीन आई थिंक ये जो आप कह रहे थे कि डाइवर्स आइडियाज जो हैं वो उनको रिजेक्ट नहीं करना है। आई मीन अलग अलग संस्थाएं जुड़ते हैं, कॉमन गोल रहता है, लेकिन उसमें भी लोगों की विचारधारा अलग रहती है, और अगर विचारधारा अलग है तो उनको एकदम से नो आई मीन जुड़ना नहीं रहे, उनका आइडिया not you're not taking cognizance of that. Wo I think I guess one of the points you brought up was very important. Sharmishta, we have to be cognizant of time now. We are right, absolutely. Actually, behind schedule. So thoda so we have to. Correct. Ram, may I add one or two yes, points? Sukanto, yes, Sukanto, please. Please. And then we will take it to Sanjay ji. And then Sanjay ji, I think just 2 points that I have been in the part of his coalition building of we are calling it the Divinet Foundation for the last 15 years or so. Okay. I think 2 points have been very important in terms of that being a lead agency, how you are facilitating to establish the values of one among equals. That is very important because we have to accept that there is hierarchy within the CSOs also. So how you establish that these organizations who are relatively small, how they can also be equally participating and be a part of the decision making processes, and in the process everyone should feel that they are also contributing, at the same time they are also growing. I can just get one examples of these poultry initiatives in Jharkhand, where Pradhan has piloted one model, but taking this model across Jharkhand, where everyone has participated and everyone has contributed to make it across Jharkhand. So how you make that space for everyone to contribute, and also in the process they are learning. I think these two are very important for a coalition to succeed. In my experiences for the last 10 years or so. So that I found very exciting. At the same time, the people who are coming in the coalition, whether the decision making, the people who are at the decision making space within the organization, whether they are coming and giving time for the coalition. But sometimes it has happened that people take it kind of a प्रोग्राम जो ये एक्चुअली उनका मेन स्ट्रीम प्रोग्राम के हिसाब से नहीं लेते हैं वो, एंड उसके चलते कोalitions के इंपॉर्टेंस नहीं आ पाते हैं. सो हु आर कमिंग इन द मीटिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट to take the lead. I think these are 3-4 points that is coming to my mind while we should take care while bringing up any coalition. Yeah. Thank you.
Ram, I'm in adding some important point. Yes. Go ahead, Ram, Sanjay ji. Please, संजय है. Vijay. ओके. मुझे लग रहा है कि प्राण साहब और अभी प्रधान की तरफ से जो सुकुंतला ने रखी अपनी बात, उसके बाद मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप कॉलेशंस के ऊपर नज़र दौड़ाएं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो ज़्यादातर कॉलेशंस 2 वजह से टूट रहे हैं. एक जो बड़ा टूटने का कारण है, ये जो फंडिंग बेस्ड कॉलेशंस हैं, ये सबसे बड़ा कारण है. एक फंडिंग एजेंसी आती है और एक उद्देश्य के लिए पैसे देती है कि ये कॉलेशंस होगा, उस कॉलेशंस में से कुछ फंड आएगा, और फंड आने के बाद में ज़्यादातर मेरा अपना खुद का अनुभव है और मैं इस अनुभव के निचोड़ पे पहुंचा हूं कि फंड आएगा तब तक कुछ लोग एक्टिव रहेंगे, फिर कुछ लोगों को फंड नहीं मिलेगा तो फिर वही लोग उसके अगेंस्ट में जाएंगे, फिर वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी. आप अगर देखें, यहाँ पे थोड़ा सा हमें जिसको कहा जाए कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है. कॉलिशंस क्या है? पॉलिटिकल पार्टी भी एक कॉलिशंस है, और पॉलिटिकल पार्टीज को जब हम देखते हैं, हम कॉलिशंस के अपनी कल्पना करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि लोग, बहुत बहुसंख्य लोग जो है वो एक तरह से जिसको कहा जाए कि बिना किसी लोभ लालच के जुड़े रहते हैं. उनको अपने विचारधारा का सवाल है और वो उसके लिए धक्के भी खाते हैं, सब कुछ भी करते हैं और पार्टी के लिए अपने समर्पित रहते हैं. हो सकता है यद्यपि वहाँ पे भी गिरावट है, लेकिन संस्थाओं के अंदर मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस है, जितने भी फंडिंग बेस्ड कॉलेशंस बने वो एक समय तक चले, और एक समय के बाद जैसे जैसे भी फंड का फ्लो कम हुआ और वो टूटते चले गए. दूसरी एक और जो बड़ी बात है कि कॉलेशंस वही आगे बढ़ पाते हैं कि जिनमें प्रमाणिकता और उनके काम का रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता रहता है. अगर आपके काम का रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो क्या है कि धीरे धीरे हम 10, 25, 50, 100 लोग हैं, आपस में बैठ के बात करेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे और ये करेंगे, रोज जूम से मिलेंगे, कभी हम किसी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साझा करेंगे, लेकिन सोसाइटी में क्या जा रहा है? अल्टीमेटली इन सब के पीछे तो सोसाइटी है. सोसाइटी किस तरह से सोचती है? हम अपने को बहुत विद्वान मान रहे हैं, हम अपने को बहुत ही ये मान रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर नहीं करता. निर्भर ये करता है कि समाज कैसे आपको मान रहा है, समाज के अंदर आपकी क्या स्वीकारोक्ति है, वो आपको किस तरह से नंबर, और उसके लिए चेंज चाहिए. तो कॉलिशंस क्या गया कि परिवर्तन बहुत धीरे धीरे, बहुत ही जिसको कहा जाए कि अनविजिबल टाइप का रहता है, तो धीरे धीरे वो फिर एक तरह से उनकी प्रासंगिकता कमजोर पड़ने लगती है और उसके कारण कॉलिशंस के टूटने के असर आते हैं. और इसीलिए भारत के ज़्यादातर कॉलिशंस एक समय के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिशन, मैंने राइट टू फूड का वो कॉलिशंस देखा है जो अपने ज़माने का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलिशंस होता था. बहुत लोग जुड़े थे, बहुत ही उम्मीद के साथ जुड़े थे. राइट टू इंफॉर्मेशन का भी कॉलिशंस देखा है, लेकिन समय की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता के साथ. और एक चीज़ हम और जान लें कि एक कॉलिशंस की एक एज है, एक उम्र है. हम ये ना माने कि ये कॉलिशंस कोई बहुत ही सतत और स्थायी तौर से रहेगा. सडनली कोई कॉलिशंस किसी इशू को लेके बना और उसी की इशू की प्रामाणिकता एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तब तक चलेगा. जैसे ही जैसे वो कॉलिशंस में इश्यूज थोड़ा सा कमजोर होगा, कॉलिशंस की में उतनी चिंता नहीं रहेगी और वो धीरे धीरे टूटने की तरफ जाएगा. तो ये एक जो उद्देश्य बेसिक पे, और मुझे लगता है कि ये 2 कारण हैं जिसको सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से कहें कॉलिशंस वगैरह के लिए. मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि इसमें आयोजकों में से मैं देख रहा हूँ कि वानी है, प्रिया है, ये बड़े संगठन हैं जिनका अपना अनुभव रहा है कि हमने कॉलिशंस बनाए, सिविल सोसाइटी के बहुत सारे कॉलिशंस बनाए. अभी शर्मिष्ठा जी पूछ रही थी कि कोई ऐसे कॉलिशंस जो बहुत टूटे हों. मैं बहुत सारे देश में वॉलंटियर एक्शन नेटवर्क के नाम पे संगठन बने, लेकिन उनकी प्रामाणिकता बहुत धीरे धीरे कम हो गई, बहुत ही कमज़ोर पड़ गए, उनमें वो नहीं रहा. और उस सबके पीछे का कारण यही रहा कि हम फंडिंग, सबके पीछे का एक बड़ा कारण कि फंडिंग नहीं रही, फंडिंग मिल रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी. तो अब जो अब कॉलिशंस बन रहे हैं, वो कॉलिशंस वो बन रहे हैं कि जिनके अंदर सिविल सोसाइटी के लोग, जो भी कॉलिशंस आप यहाँ पे हम बताएं कि संस्थाओं के कॉलिशंस अब नहीं चल रहे हैं. अब कॉलिशंस वो चल रहे हैं जहाँ सिविल सोसाइटी का इंटरवेंशन है, और सिविल सोसाइटी के इंटरवेंशन जहाँ पे इंडिविजुअल्स की संख्या ज़्यादा है. और इंडिविजुअल्स की संख्या है तो इंडिविजुअल्स क्या है कि वो खुद में उनका बिल्कुल जिसको कहा जाए डे 1 से ये आशा नहीं है कि कोई फंड मिले या फंड काम करना पड़ेगा. मैं अपने जल बिरादरी और जलजन जोड़ों के उदाहरण से ये बात बताना चाहता हूँ
कि वहाँ रोज कोई ना कोई गतिशीलता बनी रहती, रोज रोज कोई ना कोई प्रयास बना रहता, क्योंकि वहाँ स्पष्ट है कि कोई फंडिंग वंडिंग नहीं है, कोई फंड नहीं रहेगा, सीधे तौर पे आगे बढ़ेंगे, रोज यात्राएं होंगी, रोज आगे जाएंगे, ये करेंगे, ये अपने इस नदी को ठीक करेंगे, उस पानी के तालाब के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो एक तरह से मुझे लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि आप कॉलिशंस को व्यक्तियों के सहारे, संस्थाओं की जगह आप संगठनों के सहारे अगर आगे ले जाएंगे तो कॉलिशंस निश्चित तौर से जाएगा। ये अपना मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। धन्यवाद। Thank you, Sanjay ji. I'm just looking at the clock, and I had a couple of more questions. Sharmishta, with your permission, what I will do is I'm going to skip another pointer that I wanted to bring forth. You know, because it's kind of been answered in this discussion that has happened about what people should be doing fundamentally different. अभी जो जितने भी insights निकल कर आ रहे हैं, what would you do something fundamentally? And all of you have answered it in some sense. You've been speaking about it. I think we'll take the last question. I would want to bring it here. All of you have worked so many years with a lot of diligence in your respective sectors, and you have read about coalitions, you have lived coalitions, you have seen other coalitions, and there have been some even international coalitions that you would have read about or you would have observed. Now, again, I would like each of you to share your experience. अगर आपके मन में, I mean, from your experience, can you share any coalition that has really provided lasting value? How have they managed to stay relevant to their cause? How have these organizations come together and worked harmoniously towards a common goal? अगर ऐसा कोई coalition है आपके मन में, I mean, if you've seen or observed, what is that single driving force that has retained and made them relevant? Would you want to, and what has inspired you? Would you want to share that? And you can probably be a little bit brief about it. And I can probably start in the reverse order now. We started with ended to Sanjay. So Sanjay, I'll come back to you now. We'll start with you and we'll come back to others. ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टडी किया है और कोलिशन जो लास्टिंग वैल्यू क्रिएट किया है और दैट इज रियली स्टेट रेलेवेंट, और उसका खास वजह क्या है? other than जन जल जोड़ो अभियान? जी 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 नहीं, मैं अपने अलावे नहीं, अपनी बात नहीं रखूंगा आराम। मेरा अपना अनुभव है कि जैसे मैंने बहुत सारे कॉलिशंस में अभी जो कॉलिशन देखा है कि एक तरह से जिसने वैल्यूज दिया, स्पेसिफिकली संजय जी, आई एम वेरी क्लियर कॉलिशंस को मैं, संजय जी, आई वुड लाइक एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। मैं जैसे राइट टू फूड, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा राइट टू फूड को। ओके, कि राइट टू फूड ने एक जमाने में बहुत वैल्यूज। अच्छा, और उसका खास रीजन क्या था? बेसिक रीजन ये था कि लोगों में बहुत ही पैशनेटिक एक अप्रोच था कि भारत में भूखमरी की समस्या है और लोगों के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, भोजन का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए और मिड डे मील और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और वो एक सोसाइटी के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला एक पहलू था। मैं वो वहाँ पे देख रहा था कि हर राज्य की जो यूनिट थी, जिलों में जो लोग थे, वो बहुत एक्टिव होकर काम करते। थैंक यू संजय जी। कितने साल तक ये चला, अगर मैं पूछ सकूं तो? मेरे ख्याल से 10 साल से अधिक तो राइट टू फूड बहुत ही स्ट्रांगली चला, और 10 साल तो एकदम पीक पे था जब कानून बना उसके बाद से, और ये सारी चीज़ें वैल्यूज में एक जो उस समय जितने भी एक्टिविस्ट लोग थे और सिविल सोसाइटी के लोग थे, बड़े पैमाने पूरे अभियान के साथ हिस्सा बने उसमें। No, it is still continuing, but not in that vigor and rigor, but it is still going on. Okay, thank you Sanjay. Sukanta, what about your experience? Would you want to share? My experience comes from my own work areas only, because I'm not very I think Divinet Foundation is a coalition of around 25 CSOs in Jharkhand, and which has been running for the last, I think, around 15-17 years. Sorry, and what's the name of the foundation again? Divinet, vikasbazaar.net Foundation. Okay. Yeah. So this foundation is actually working for the livelihoods for the poor and marginalized. It's a coalition of 25 CSOs, and that has been running successfully for the last 15 to 17 years.
yeah, so that in my way, that's one of the successful And what was really coalition. the driving force of the success of this I organization think or this coalition? everyone that I think everyone wants to contribute for the issues of food and hunger. The food insecurity and hunger was the major focal point, and based on that, everyone has joined and moved that agenda. And it is and lot of CSOs have actually gained a lot of knowledge around this. And if you see the contribution around assetization on NREGs, now horticulture is one of the major program taken up by government of Jharkhand because of this initiative. I think these CSOs have contributed a lot in kind of creating an examples that in the uplands the mango plantation can be an options for the poor and marginalized. And now in each year government is taking up around 5,000 acres of orchard in every year, which was a kind of a dream at least 10 years ago. So these are the contribution of this coalition who have made up, who have tremendously demonstrated the model and helped the government to come forward and take up this model. So this is one of the areas that I found that this coalition has been successful in that fashion. Okay, great. Thank you. Ashish ji? राम सीपीएम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे कोएलिशंस बनाए हैं और मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, बट कोएलिशंस तो हैं। और क्योंकि वो जो गोल है वो बहुत स्पष्ट है कि हमको क्या करना है, तो बहुत कुछ है करने को, बट वी आर एड्रेसिंग ओनली दिस वन पीस ऑफ प्रॉब्लम कि हम स्पेशल नीड्स के बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे टू लर्न बेटर, टू लिव बेटर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो एक सिंगल गोल होने की वजह से भी और एक फोकस रहने की वजह से कि हम इसी पे काम करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो मुझे लगता है कि उनके कोएलिशंस काफी लॉन्ग टर्म तक चलते हुए मैंने देखे हैं। वंडरफुल। प्रांजी? बेसिकली मैं जिस प्रोसेस में गुजरा हूँ वहाँ तो बताया ना कि सरकार में आने के पहले तो हम लोग खुद एक जेपी मूवमेंट में हम लोग थे, तो वो दूसरे तरह का एक तरह का मूवमेंट था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय युवा परिषद में आए तो उसी में तो किसी दूसरे संगठनों के साथ या इस तरह के जो कोलेशन उनके साथ जुड़ने का अवसर कम मिला और समझने का भी कम अवसर मिला। फिर सरकार में लंबे समय तक रहना हुआ और अभी तो है, लेकिन मैं अभी जिसके साथ जुड़ करके और काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मिशन समृद्धि से बढ़िया तो मुझे मतलब अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जिस तरह से वहाँ आज की तारीख में कई 100 संगठनों को जिस तरह से वहाँ जोड़ा गया है मिशन समृद्धि में, और पिछले मैं पहले दिन से ही जुड़ा हूँ लगभग वहाँ पर, पिछले 6 सालों से तो 5 सालों से तो लगातार मिशन समृद्धि के साथ धीरे धीरे 5 से 6 साल हो रहे हैं। और वहाँ जिस तरह दिनों दिन वो बढ़ता जा रहा है और होते जा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा उदाहरण है और उसको तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से व्याख्यायित कर सकते हैं कि उसके क्या विशेषताएं हैं, जिसके नाते दिनों दिन उसकी रीच बढ़ती चली जा रही है और उसके पार्टनर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बात इतना नहीं कि वहाँ पर ठीक है कुछ सपोर्ट है उस तरह से, बल्कि उससे अलग हट करके तमाम हैं जिन्होंने वो सबको सपोर्ट, वहाँ इस तरह का कोई उस तरह का मॉनिटरिंग सपोर्ट की बात वहाँ तो है ही नहीं, किसी तरह का कोई इसलिए नहीं जुड़ता वहाँ। लेकिन जिस तरह से जुड़ते हैं और जितना एक्सपोजर होता है लोगों का, और उसके साथ लगता है कि वो विषय भी अपने आप में गांव की समृद्धि का विषय काफ़ी बड़ा विषय है, गोल भी एक लंबा गोल है, तो सबके उसमें स्पेस है, सबके जुड़ने का स्पेस भी है उसमें। और जिस तरह से है वो है कि वो बहुत अच्छे तरीके से, और अभी चूंकि ग्रोइंग एकदम से जिसको कहते हैं ना कि वो उभार में है, उठ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल प्रगतिशील अपने चरणों में है। तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो सबसे पहला अनुभव यही है सिविल सोसाइटी के साथ। Thank you, Pranji. In fact, I think one thing that we've observed and some statements were also shared earlier, first among equals, I think जो equality in between, there's no large NGO or a smaller NGO, and if you're all together with a common purpose, are we listening to each other? Are we just accepting each other's different perspectives जो होंगे? And every time we don't have to agree with each other, but there are different perspectives, and we need to be respectful of that. Thank you, Praji. Ashraf, would you want to share your thoughts?
Yeah, I'll take the example of very hard, so many beautiful places, but Vikalp Sangam is a collective of organizations and it works on alternatives. Basically, the whole idea विकल्प कि किस तरह से हम ये डेवलपमेंट पैराडाइम जो हमने अभी है जिसमें हम उसके क्या ऑल्टरनेटिव उससे कैसे निकल सकते हैं एंड what I think makes it really powerful for me or a learning experience ज़्यादा I think 6 7 maybe less years, not very old. Kalpavriksha and many such organizations are part of its startup. uh, इसमें मुझे लगता है सबसे खास बात जो आपने कुछ कही कि और मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी ये बर्ड्स दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इज there's this birds darlings किसी ने देखा है birds की formation में these birds fly together in giant formations and they are it's a wonder of the world. और अगर आप भरतपुर जाएंगे वहां पे भी आप देखेंगे कहानी गाइड जो टूरिस्ट गाइड है वो कहेगा आपको वो रिक्शा वाला कहेगा ये बर्ड्स हैं रोजी स्टारलिंग्स और ये जो भी देखती हैं ग्राउंड पे उसका एक फॉर्मेशन बना देती है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स. सो समटाइम्स यू सी अ बटरफ्लाई इन द स्काई और तो ये इनकी खास बात है कि ये अ, हजारों में साथ फॉर्मेशन करती है और एक दूसरे से क्रैश नहीं करती. दे डोंट बैंग अगेंस्ट ईच अदर एंड इट्स ऑलवेज अ वंडर. एंड उसका आंसर ये है कि 7 बर्ड्स का एक फॉर्मेशन होता है और ये पूरे थाउजेंड्स में 7 7 बर्ड्स एक दूसरे को देखते हैं. सो दे लुक आउट फॉर ईच अदर. सो दी 7 are micro units of this multitude. एंड मुझे ये विकल्प संगम में बहुत एक्सपीरियंस होता है कि ये ऑल्टरनेटिव्स की कॉन्वर्सेशन स्मॉलर स्मॉलर कलेक्टिव्स में हो रही है, हर जगह हो रही है. तो एक कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं है बट साथ में ये लोग छोटे 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 हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में भी उसका पार्ट हूँ और वहाँ पे अलग अलग कॉन्वर्सेशन कोई यूथ पे कर रहा है, कोई लैंड पे कर रहा है, कोई सॉइल पे कर रहा है, कोई गवर्नेंस पे कर रहा है. exploring alternatives in action and reflection. And they're all like these birds in formation in large numbers. तो मुझे लगता है वो डिजाइन के every dot is important जो आपने कहा. Everybody is a star in a way. And it's not big star or small star. And together they form the constellation that show the way. मुझे ये बहुत inspirational लगता है the way Vikal Sangam works. It's very Wow. very open. That's Thank so you. beautiful, Ashraf ji. In fact, the thought that's coming in mind is what better coalition in the world than nature, isn't it? And there's so much that we learn from nature, and if we can just imbibe the nature, and this morning when we started this, there was a goosebump video that was played. It was the second goosebump video, and I really respect and thank you for sharing that video. We will play that video towards the end of this, but as a concept, I think where micro units not and looking out for each other and not crashing into each other. That's the grand beauty of the design of nature. Thank you for bringing that, Sonali. Um, Over to you. So, couple of, I mean, a part of some coalitions, and where I feel what we do is you keep investing in those relationships. Mission Sabrindi is one of them. Like Pranji said, a very valuable coalition where you keep on sort of drawing from each other, investing in those relationships, keep meeting. I'm similarly a part of Catalyst 2030 login, where we are sort of doing some, a journey which is not completely goal driven at all points of time. But what we are cognizant of is that we have to keep on investing in these relationships. But when time comes, when there's a need, then because there's already investment and there's already these relationships, people understand each other. Uh, these organizations, this coalition can get together and do things on a mission mode. And I am reminded of the entire during the COVID. I mean, how many organizations, along with the government, actually just sort of coalesced and that this is now our job. We have to do this. There was a very clear-cut goal, and there were already relationships existing, and that helped. Rather than at that point of time to come together, start understanding each other, and then the mission is lost. Thank you, Sonali. I think now we just have only 5 more minutes. Uh, so there were some questions in the chat box, but I really think that these have been answered during the course of today's discussion.
Uh, and we just have, since we have 5 more minutes, probably I can quickly take a minute or two to summarize it. And thankfully, I've taken some notes of all that you said. So I'll just quickly run through some quick summary. When we talked about what is that single factor, role clarity, and I mean, I'm not going to repeat the names, but role clarity, uh, commonality of purpose, uh, and trust, and again agreement or align agreement on the purpose, alignment of the purpose, and relationship is very important. Focusing on relationships is very important, because relationships help to build the trust if you're giving respect to the relationships. Ashraf did mention about charter. Having the charter is so important, not just at the high level, but the charter flowing down to the micro level, right? And another important thing is the power of simply being together, the power of love that is actually there is such a very important factor why the coalition is to be there. And ultimately, it kind of boiled down to the fact that the purpose has to be crystal clear. And so that is a very common factor that's coming out in all the speakers, all the panelists have said that very clearly. Frictional points, why coalitions don't deliver value. Uh, and Sorry, Shanish, Ram, before that, yeah, I think what yes, another point was very sure, clear is transparency. yes. Transparency, which leads to trust and leads to a good relationship. You know? Transparency, that's right. Transparency that leads to trust and the relationship. Yeah, and Right. vice versa. Thank you for bringing that in. And in terms of frictional points, I think all of them hit upon this fact about aham or ego, right? Ego is inhibiting us from listening. It's my way or the highway. We've seen that, especially when I remember even I think Sanjay brought it up. Even when you have funding organizations, funders sometimes try to drive their own agendas, and they're saying, "हम fund देंगे अगर ये objectives को पूरा करने के लिए we will be funding." So whether funders are not saying, "Hey, listen, let's listen to the grantee because he or she is coming from the grassroots. They know the real core issue, right?" So we don't see that often. So that's again, lack of listening, lack of ego. I mean, the ego, lack of leadership. Leadership is so important. And lack of capacity and competencies. We heard that also. Having lack of intention sometimes. And then, of course, a very practical point that Ashraf did speak about was key. Sometimes we get into the coalition and we're not sure whether we are primary or secondary and how much time can we give. You have to be clear on what is your role in the coalition, how much can you give, how much can you not give, saying, knowing when to say no. We also heard about focusing on sometimes events and individuals rather than looking at the big picture, lack of systems thinking, and I like this point about what Pranji said. जो फाउंडर का ड्रीम जो होता है ना, वो फाउंडर का ड्रीम कैन बिकम द यूनिवर्सल ड्रीम ऑफ एवरीवन. And again, this goes back to what you may have the vision charter at the high level, but micro level में is everybody breathing and living the same dream. वो DNA में है क्या? So that is it came out in very strong examples that Pranji talked about. Red Ribbon Express, Nehru Yuva Kendra, सब लोग, how about breaking each other's banners, and lack of appreciation, and that giving the respect to a partner, how small or how big doesn't matter, but respecting the partner, and don't reject because they have a different perspective. The minute we reject, then okay, you've alienated her or him, and then yeah, you're there, but you're mechanically there in the coalition, right? So that was a very important point. Sukanta talked about one among equals. Reality is that hierarchy hai CSOs mein, but how do you bridge that and bring the equality? And then finally, Sanjay spoke about a very important thing कि जब performance is very important, जब हमारे actions में achievement नहीं हो रहा है, when there are then people lose interest in coalitions happening, but the lack of performance and lack of achievement of results is kind of weakening the coalition. So that is what I had to. Anything else, Sharmishta, that you would want Yeah, to speak I about? kind of liked, I Yeah, think, Ashraf's point where she said that leadership and distribution of leadership. Now, yeah, initially, when you form the coalition, under the enthusiasm of rotating leadership and taking responsibilities on a
in rotation, you probably don't realize that you initially the core leadership has to be around for a significant amount of time to Yes, make it sustainable, to establish the coalition before you start distributing it to the leadership. So that I think also is an important point, that the establishment of the coalition with one strong leadership and then following it up with distribution of leadership. that's right. uh, And you know finally, in the end, I think when we ask them to speak about different coalitions that they have admired, I think eventually it all boiled down to one simple thing: कि purpose कितना strong है. How are people aligned to that single-minded focus and single-minded purpose? Because Sankam ho, या CDM ho, या Vikas Bajaj Foundation, Right to Food, all of them are very, very clear about the common purpose that was really guiding them. I have got nothing more to say. I really enjoyed this interaction with all of you: Sonali, Chandrasekhar Pranji, Sanjay Singh, Ashish Ji, Ashraf, and Sukanta. Thank you all very much. Sharmishta, thank you Thank you. for moderating this in spite of not feeling so well today. But I would like to actually request Amit or Srashti to please play that video for us. And on that note, I really thank you all for being with us today. Thank you, Pradhan, for this opportunity and helping us celebrate with you on the 40th Foundation Day. Can we please have the video? Yeah, yeah. Thank you, Congratulations, Ram. Thank you, Pradhan, and thank Sarmishta. you, everyone. Thanks, everyone. Congratulations to Pradhan once again. Let's enjoy the video, please. I guess it's over to Anup now. Some हाँ वो मैं ट्राई कर रहा हूँ. हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो Yes, Ram, yes. there was a technical glitch. Can you hear me? Yes, we can hear Ram? you. Yes. हाँ. तो एक मेरा टेक्निकल ग्लिच हो गया था. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राम को और शर्मिष्ठा को. आप अस्वस्थ थी, उसके बावजूद जो है आपने इतने बेहतरीन तरीके से इस सत्र का संचालन किया है और अपने सभी उन साथियों का जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ में साझा किए. आप लोगों की बातों को सुनकर, आपके विचारों को जानकर बहुत प्रेरणा मिली है और मैं आप लोगों को प्रदान और अन्य सभी संस्थाओं के माध्यम से आयोजन समिति की तरफ से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो है हमने इस सत्र का समापन किया है और हम लोग एक बार पुनः 1:45 पर, तो अब हम लोग एक लंच ब्रेक के लिए जो है लंच ब्रेक के लिए एक ब्रेक लेंगे और 1:45 पर हम लोग फिर से असेंबल होंगे
जो हमारा दूसरा सेशन होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे व्हाई आर डोनर्स सीकिंग टू को फंड, तो उनकी चुनौतियां क्या हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। And we will reassemble once again, as I said earlier, at 1:45. And thank you so much once again, Ram and Sharmishta, for so well anchoring and moderating the first session and bringing Samagam this far today. Thank you so much to Thank you, everybody. Anup. Thank The you. pleasure is all ours. Thanks so much. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, Ram. Thank you so Thank you all. for Thank you. facilitating this collective thinking. Thank you Thank so you. much. धन्यवाद आशीष Thank जी. you, Ram. Thank you. Yeah. Thank you all. Thank you, Sukanta. Thank you, Sonali. Thank you.